architecture has to be humanistic, architecture has to be humble. It's not about the fact that creating a mega structure, but something that people can relate to. You can see that, a lot of material that we think is environmentally friendly might not be the case because data doesn't lie. You have to balance between idealism and realism. Can architecture solve social problems? Assalamu alaikum ladies and gentlemen, my name is Rahil Bhatt. Welcome to Think PVC podcast. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a young architect who I would definitely put in the category of a social entrepreneur. His latest venture, Concept Loop, is working to repurpose and reuse plastic waste for architecture solutions. तो आज हम उनसे बात करेंगे कि what are those few things that we can do as a collective and as individuals to help the environment do better. आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर दबीर हिमानी. How are you doing? जबरदस्त. हमारे पेरेंट्स के ज़माने में या हमारे ज़माने में भी मतलब या इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, तो आर्किटेक्ट बनने का ख्याल कैसे आया? How did you get into this? So I come from a family where there are a lot of contracting company owners, and when they would talk about architecture and talk about architects, they would talk about it in a very in a high manner. So जब I was growing up, so I saw that. And then I always wanted to do some field that was based on critical thinking. And that is something that really pushed me to actually apply to the university. And I think I'm happy to say that a lot of things I was expecting, I was able to get from this field. तो when you were studying, उस वक्त एक design philosophy तुमने सोची होगी यार मैं ये करना चाहता हूँ and this is what I want to do. And then when you came into the practical दुनिया के अंदर रियल लाइफ के अंदर आए तो आई एम श्योर देयर वाज अ बिग डिफरेंस. तो व्हाट वाज इट बैक देन? तुम क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हो इस फील्ड के बारे में? Right. So it's very interesting because your values and your thought processes really are the kind of a lifelong kind of a friend of yours जो आपके साथ चलते रहते हैं. Evolve करते हैं. बिल्कुल evolve करते रहते हैं. So when I was at Indus, so I was very passionate about the fact that can architecture solve social problems? And that was a question I posed to a lot of my teachers, and they were really kind to give a very kind of answer. Now, based on that, while I was studying architecture, I also was able to start a small NGO at that time, based in Indus, by the name of Ranuma. तो उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको अप्रोच करने की कोशिश की और उसको हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, अटेम्प्ट करने की कोशिश की. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज ऑलवेज विथ मी. So one of the things that we did at Ranuma was to test out a very small micro recycling project only. Now, based on that, when I actually went into the real field, I knew, okay, there is a possibility, something like this can happen, but I wasn't sure how. So my shuru ke initial years was something that I was, okay, I'm a sponge of sorts. There's a lot of learning to do. So there was a lot of learning, there was a lot of experiments, but these values about the fact that architecture has to be humanistic, architecture has to be humble. It's not about the fact that creating a mega structure, but something that the people can relate to. People can actually use it rather than something of an object only. तो ऑब्वियसली ये फिलॉसफी तो अच्छी थी बट पैसे भी कमाने होते हैं. यू हैव टू मेक मनी. सो हाउ डू यू कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज फिलॉसफीज कि यार ठीक है कि इज इट थिंकिंग कि यार ये पैसे आएंगे तो देन आई विल बी एबल टू डू बेटर. बिकॉज हम जैसे बात करते हैं कि किसी भी चेंज को लाने के लिए यू डू नीड financial support in some sense. तो वो किस तरह का balance किया तुमने? Right. So I think one thing that you mentioned in your previous question was when you mentioned the word evolution. So I think what I understood after working at inside Indus as an architecture student was that change doesn't come by a revolution when it's so deep rooted. It has to be evolved. So really I also feel that it's okay to do imperfect things. So it's okay to test out imperfect solutions. Until unless you don't do that, you can't wait for that one big day when you have the complete financial resources, you have complete whatever other resources that you want. So I think even if I chart out my life, that I was able to do small things on a very consistent level that eventually is on its way to hopefully lead to something which is much bigger. So I think that small changes can really make a big difference. अच्छा, from open door design जो तुम्हारा architecture project था, उस ऑब्वियसली एक आर्किटेक्चर फर्म को चलाना इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. यू नीड टू बी मीटिंग विद क्लाइंट्स, यू नीड टू हैव योर ओन टीम रेडी फॉर थिंग्स, प्रपोजल्स बनाने हैं, साइट विजिट्स हैं, ट्रैवल है. इस सब के साथ
कैसे एक और वेंचर आप आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉन्सेप्ट लूप, ये वेंचर के बारे में कैसे सोचा? ऑब्वियसली यू वांटेड टू डू समथिंग बट हैविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी फॉर्म्ड व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स, हाउ डिड दैट कम अबाउट? Right. So I think one of the things that I believe in is that you can't do things alone. So that's I'm very clear about. So even Open Door Design Studio has multiple partners, and there are some amazing and very talented people that I work with. So when I was actually working at Open Door, so the conversations that we had in studio, the problems that we used to talk about. So one of the problems that we talked about is waste. In fact, I remember very clearly that one of my colleagues, Sherebano, she came from outside Pakistan, and she said that there's a lot of indigenous architecture all around the world. You go to Jaipur, you look at the pink stone, but in Karachi, I couldn't figure out what it was. Maybe it's the trash that is around, right? And that got me thinking. So uske baad what we did was that we said, okay, let's talk about the problem of trash and understand it and study it. How we have actually managed to do all of these things is just because I have a fabulous team in both these companies that I've been part of. I would give everything to my team. I think they are some of my team members as are going to be industry leaders, and this is one of the things that I'm very happy to say that the teams that we've been able to carve out at all the organizations I've been part of have been some great people. It's also got to do a lot of luck, but it's also something I'm very happy about. Nice. अच्छा, हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, इस वेस्ट के बारे में बात करें, तो व्हाट इज गुड प्लास्टिक एंड बैड प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक को हम अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते. इट्स जस्ट हाउ वी यूज इट एंड हाउ वी रीपर्पज इट. तो व्हाट इज गुड प्लास्टिक एंड बैड प्लास्टिक? Right. I think that's a great question to ask, because what we unfortunately like to do is to ये ban कर दो, वो ban कर दो, without understanding the consequences of things. Now, good and bad plastic are there. The bad plastic is the kind of plastic जो हमारी laziness और just because it's cheap हम उसको discard कर देते हैं. आप जैसे for single use plastic की बात करें, जो approximately 30 to 40% of all the waste plastic that is produced आपका single use होता है. और single use का मसला एक और ज़्यादा ये होता है कि single use में people cannot even dispose it of सही से. So that's a bigger problem. Now the good plastics are the plastics that are helping us environmentally in a way, because to give you a context कि जो हम प्लास्टिक की थैली की बात करते हैं, you have to use it X number of times a cloth bag so that उसका carbon footprint आपके प्लास्टिक की थैली के साथ मैच करे. So we have to really understand that maybe just consuming more tote bags is not the solution, but you have to make sure that we use that one tote bag in a way that हमारे जो हम अपना प्लास्टिक बैग को रद्द कर रहे हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट हम उसका फ़ायदा उठा सकें. Now, medical use में when you go and all of us have been exposed to plastic, and it's saving lives. When we travel in our cars, we travel in our airplanes, तो वहाँ पर this is all plastic. Now, even in building construction industry, a plastic that is able to withstand not a lot of उसकी जो लाइफ हम ज़्यादा कर पाते हैं, वो एक नॉर्मल मटेरियल से अगर हम कार्बन फुटप्रिंट को इसको एनालाइज करें तो हमारे बहुत सारे सरप्राइजिंग आंसर आएंगे. स्पेशली वन ऑफ द थिंग्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट जो आज दुनिया में बहुत काम हो रहा है, वो हो रहा है प्लास्टिक की डिज़ाइन के ऊपर. कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन को हमें फोकस करना है कि क्या हम उसके डीएनए में, क्या उसके डिज़ाइन में रिसाइक्लेबिलिटी डाल सकते हैं, क्या उसको उस 5 साल 50 साल या 80 साल बाद जब दोबारा वेस्ट का पार्ट बनेगा तो क्या वो दोबारा एक मटीरियल हो सकता है, अ वेरी सर्कुलर थिंग. सो इफ द आंसर इज येस, then that plastic is something that we should use. And when we actually do a detailed LCA analysis, and I'm sure a lot of academia is actually working on that, you can see that a lot of material that we think is environmentally friendly might not be the case, because data doesn't lie. So वही बात है कि कुछ चीज़ें वही जैसे लाइक यू सेड कि कुछ चीज़ें हम एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, बट वी कैन कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट, इम्प्रूव देम. उनकी मटीरियलिटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हम डाल सकते हैं ताकि वो लाइक यू सेड कि बायोडिग्रेडेबल हो जाए या वो फुटप्रिंट को कम करने में हमारी मदद करे. अच्छा, आर्किटेक्ट्स का काम क्या सिर्फ बिल्डिंग बनाना है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, या आर दे और शुड दे ऑल्सो बी पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी? Right. What is that? So I think when you mentioned this, when just for example अगर किसी कम्युनिटी में हम आते हैं और एक इंटरवेंशन करते हैं तो उस इंटरवेंशन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. सो एज एन आर्किटेक्ट व्हेन यू गो इनटू फॉर एग्जांपल अगर एक किसी गांव के अंदर एक घर बना रहे हैं हम और वो घर ज़मीन के दरमियान है किसी की, तो द इंटरवेंशन मीन्स दैट उसकी जो दीवारें हैं वो किसी के घर का दीवार होगी. सो क्या वो उसकी लाइट ब्लॉक कर रहे हैं? क्या उस घर के आसपास होने से किसी की हवा रुक रही है? क्या उस घर के उस जगह होने से
वहाँ पर जो बच्चे खेलने आते थे वो नहीं आ रहे. So I think there are many things that as an architect you have to see that what will be the consequence of your intervention. And a lot of times what also happens that community building can happen because of simple interventions. There's an excellent project in somewhere in Africa where they just made a school, और उस स्कूल के पास जो उनकी फील्ड थी वो सुबह के अंदर जब स्कूल चल रहा होता है स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, शाम को कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, और रात को व्हाट दे डू इज़ दैट दे हैव दीज मूवी नाइट्स जहाँ पर देयर दीज NGOs कम और जो पब्लिक हेल्थ की और बाकी हाइजीन की उनको दिखाते हैं सारी. सो आई थिंक that kind of intervention brings the community together rather than actually making a wall and then blocking people out, because then the consequences of that is that socially you break the social fabric, and जिसके consequence आपके short term भी होते हैं और long term भी होते हैं. No, definitely. अच्छा, internationally अगर हम देखें तो recently UN has called for next generation humanitarian architects. What are your thoughts on that? So I think when I was going through that, I think what interesting और alarming बात ये है कि अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग से हम ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ आ गए हैं. अच्छा. सो द चैलेंज इज दैट नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम वन डिजास्टर टू द अदर डिजास्टर. नाउ इफ यू लुक एट पाकिस्तान के हमें पता है कि हमने अभी फ्लड्स के बिल्कुल बेयर किया, बट वी नो दैट देयर इज अ चांस दैट कभी भी आपके पास जो ग्लेशियल फ्लड का इवेंट आ जाए. सो नाउ एज एन आर्किटेक्ट योर इंटरवेंशन हैज़ टू बी समथिंग दैट इज रिजिलियंट, एंड आई थिंक यास्मीन लारी हैज़ डन सम फैबुलस वर्क इन दिस स्पेस, where her response to both earthquake design in the north and also her interventions in the south has been amazing, where you are not only thinking about housing people but also what kind of a disaster would come and how would they react to it. ये तो नहीं होगा कि आपने एक intervention की और वो intervention के जब disaster hit हुआ तो people are again at this same space. तो उससे हमारा waste of resource भी नहीं होगा, उससे हमारे लोगों की जो security of life and their material will also retain. अच्छा, जो हम एक बात करते हैं पाकिस्तान में एक जो बड़ा प्रॉब्लम होमलेस लोगों का एक प्रॉब्लम है, एंड हम ये सुनते तो बहुत हैं कि भाई लो कॉस्ट हाउसिंग सोल्यूशंस होने चाहिए और हमें इस तरह की स्पेसेस बिल्ड करनी चाहिए. व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ नॉट हैपनिंग? क्योंकि दुनिया में तो हम देखते हैं इट्स नॉट अ बिग डील और बहुत सारी ऐसी स्पेसेस और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ बिल्ड की जाती हैं. पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा और कैसे हो सकता है? राइट, आई थिंक ये बहुत ही एक loaded question per se. There are multiple layers to the problem. Again, I think there are people much more expert in this field, but I can give you an overarching answer. तो एक तो finance का और land ownership का is a big problem. Again, we like to invest in land, so the artificial price inflation happens. The other thing is that what really happens with low-cost housing is that a lot of, although it's a big field and it's a financially also very lucrative if someone can crack it right, a lot of architects unfortunately are very focused on working globally for the wealthy 1-2%. However, I'd like to share that there's a wonderful solution a young entrepreneur by the name of Nabil Siddiqui has done. Modulus Tech के नाम से उनकी company है prefab housing में, and it's for a fraction of a cost that normally happens, and it's also climate smart. We're happy to share that हमारे office में ही वो design हुआ है. My colleagues Murtaza, Kareem and Hamad worked very hard on this. There was someone, a colleague from Canada who did wind analysis for it. So there has been work on it, but I think what needs to be done is that it has to be approached from all fronts, from the finance front, from the land front, and also the government support has been very minimal in this sector. So although like you or we all would have heard itne lakh ghar ban jayenge and things like that, but maybe starting small but doing it right rather than having big claims would be the best way forward, in my opinion. अच्छा, talking about new materials, talking about cost effective solutions, जो आजकल के buzzwords हैं कि यार हम cost effective भी होना चाहते हैं but we still want the same kind of finish. Artificial materials बहुत सारे आ गए हैं. What are those few materials that you've been using recently or you would recommend people to use for their homes, for their office spaces, या जो भी इस तरह के लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी स्पेसेस को? Right. So I think one of the things that people are now moving towards are that they want to have some kind of life of the building को extend करना चाहते हैं. तो उसमें quality materials की there has always been a problem in Pakistan, and the challenge what has happened for architects is that we have to choose between very pricey imported materials, and now in a blessing in disguise is that because of the forex problems and things like that, there are now people locally making these materials.
Now it's a transition of sorts, and now I think as clients, as architects, as industry, everyone in the industry, we have to support these manufacturers who are now moving into Pakistan. Maybe their product is a work in progress, but we have to endorse it and help them improve it. Only then we'll be able to get out from the cycle from a tile to a ceiling board to a window, everything has to be imported. Because honestly speaking, it's not sustainable. And I think after a while, we are doing ourselves a disservice and also the industry on being relying to everything from not from our own country or something from our own people. अच्छा, तो कॉन्सेप्ट लूप के बारे में दोबारा थोड़ी सी मैं जानना चाहता हूँ. द प्रोडक्ट दैट यू गाइस आर मेकिंग, उसके बारे में कुछ बताओ. Right, right. So concept loop, if I can give you a kind of a overarching view of it, that when we started working with plastic waste, we understood that इस प्लास्टिक वेस्ट के अंदर बहुत हाई वैल्यू प्लास्टिक भी है जिसकी ऑलरेडी एक स्ट्रीम बनी हुई है. सो वी डिडंट वांट टू फोकस ऑन अ स्ट्रीम दैट इज एक्चुअली देयर वर्किंग. ऑफ कोर्स इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, बट वी वांटेड टू फोकस ऑन द लो वैल्यू प्लास्टिक वेस्ट जो किसी को उठाना नहीं होता. हाई वैल्यू मतलब बॉटल्स आ गई और ये चीज़ों की जो कि बहुत इजीली बिक भी जाती हैं, फाइनेंशियली भी उनका कोई ना कोई फ़ायदा होता है लोगों को, जो हमारे यहाँ लोग उठाते भी हैं बहुत ज़्यादा और बेचते हैं जाके. बिल्कुल. तो हमारे स्कैवेंजर्स वही उठाते हैं कि जिसकी सेकेंडरी वैल्यू होती है. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में हमारे यहाँ पर कबाड़ी वाला आता था, या भी आपको स्कैवेंजर उठा रहा है तो वही चीज़ उठा रहा है जो आगे बिकता है, विच मीन्स दैट इसकी फाइनेंशियल वैल्यू, विच मीन्स इट कैन बी रिसाइकल्ड. Now, we wanted to focus on the problem of low value plastic waste for two things. One, इसकी कोई सप्लाई चेन नहीं है. इस वजह से आपको बिस्किट चिप्स के रैपर्स दिख रहे होते हैं, कोई उठाता नहीं है, थैलियाँ दिख रही होती है. और दूसरा ये कि दिस इज समथिंग दैट जिसकी कोई बिकॉज फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, तो हम जब उसको अपने बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट बनाएंगे तो उसकी हम फाइनेंशियल वायबिलिटी देख सकेंगे. Now, when we started doing that, we did a lot of experiments, roughly 200 odd experiments, and I'm grateful to the entire architectural community and a lot of other people that they were part of our focus groups. They gave their advice and everything that we requested from them for. So, हमने उसके बाद ये सोचा कि okay, can we do a hybrid, which is again, like I said, that you have to balance between idealism and realism. So, what we did was that can a traditional product be a hybrid product where you have 10 to 20% के दरमियान उसके अंदर एडिटिव डाल दें उस लो वैल्यू प्लास्टिक वेस्ट का, जो आपका 30 मिनट का रैपर है उसकी ज़िंदगी आपने फ़ौरन से उठा के 30 से 50 साल कर दी. जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो ब्लॉक लगा हुआ है, यू नॉट गोइंग टू चेंज दिस अंटिल यू मूव हाउसेस. एंड बेस्ट केस सिनेरियो, होपफुली पीपल नो, डोंट डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस बिफोर 30 to 50 years. सो दैट इज़ द अप्रोच दैट वी टेकिंग. सो आर प्लास्टिक एग्रीगेट, जिसको हम अपने प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से लो वैल्यू प्लास्टिक वेस्ट से उसका एग्रीगेट बना रहे हैं, उसको हम इको ग्रीट कह रहे हैं. एंड दैट कैन बी एडेड इनटू एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट इज कंक्रीट बेस्ड एंड नॉन स्ट्रक्चरल एट दिस पॉइंट. तो पीवीसी के बारे में व्हाट हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन, हाउ वुड यू रिकमेंड इट, कहाँ तुम्हें लगता है ये अच्छी यूटिलाइजेशन हो सकती है इस मटेरियल की? बिकॉज बहुत सारी जगह पे तो यूज़ हो रही है, हमें पता नहीं, वायर्स में हो रही है, पाइप्स में हो रही है, बट देयर आर अदर मटेरियल्स, न्यूअर मटेरियल्स जो कि अब मार्केट में अवेलेबल हैं, विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट मे बी. Yeah. So essentially, I think one specific use case scenario that I know of is that हमारे यहाँ पर बीच पे the salt content is insane. It's one of the highest in the air in the water. तो वहाँ पर बहुत सारे materials वहाँ perform नहीं कर पाते. So what we have seen in our experience that by using doors and windows made out of PVC, उसमें the amount of effort and the amount of maintenance has come down to next to zero. So that's a great use case that we have seen that जिसका बहुत फ़ायदा हो सकता है. बाकी I think like we spoke about earlier that once we do the LCAs and all this information जो sustainability के हिसाब से हम share कर सकते हैं, तो I think then we can really talk about the fact that how one product जो plastic based है ये actually ज़्यादा सस्टेनेबल है किसी और प्रोडक्ट से जिसको हर 10 साल बाद आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो फ्यूल है, उसके जो ह्यूमन टाइम है, ये सारी चीज़ें. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक पीवीसी ब्रिंग्स कि अगर आपकी लाइफ की जो पूरी साइकिल है वो इंक्रीज करती है बिल्डिंग की, और अपनी जो साइकिल है अगर उसकी रिसाइकेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, तो आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट गेम चेंजर. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे बताओ कि तुमने जो part of multiple companies, you know, you founded a few companies, concept loop पे तुम काम कर रहे हो, you also been running an NGO. What is next for Dabeer Hemani? So I think one of the things is that I just feel that I'm a work in progress. There's so much to learn. So one of the things that I love to do is to sit in a room where there are people much smarter than me. So when I exit that place, I become 1% more smarter.
The other thing I want to continue is that I want to continue making teams and empower people, because I've been very fortunate to have great mentors who have helped me grow myself. So these are the two things, and definitely I hope that we are able to scale concept loop in a way that it actually solves the problem of low value plastic waste in a way that आपको पता चले कि कराची का फॉर एग्जांपल 0.5% कचरा अगर लो वैल्यू प्लास्टिक वेस्ट इस तरह से कम हो रहा है, so it could be measurable thing. For Open Door Design Studio, I feel that we are on a very good place where there are some very exciting projects that we are doing all across Pakistan. There's an orphanage that we are doing. This is in Islamabad, and these are these kids who were affected and orphans from the 2008 earthquake that happened. So our client had taken them under their wing, and now we're making a purpose-built facility, and it's been actually उसके अंदर पाकिस्तान का one of the first incubators भी बन रहा है orphanage के अंदर ही. और the idea is that how can these kids, while they are going through their education and everything, कि वहाँ पर कोई business भी start कर सके और वहीं के teachers और वहीं पर लोग आकर उनको workshops भी दे सके. So when they exit the orphanage and go into the real world, उनकी शादियाँ हो जाए सारी, तो उनकी ज़िंदगी से वहाँ पर से एक change ऐसा हो कि वो उनके आगे की नस्लों को फ़ायदा हो जाए. So lastly, I want to know कि as individuals and as a collective, मोहल्ले में लोग या अपने घरों के अंदर भी या घरों से बाहर भी या अपनी cities में लोग क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी क्या हम कर सकते हैं to make this environment थोड़ी सी बेहतर, कैसे कर सकते हैं? Right. So Rahil, I mean मज़े की बात है कि, and this is something I talk about a lot, that we used to be more sustainable before we became more modern per se. आपको याद होगा कि आपका जो शर्ट है जब वो आप डिस्कार्ड करते होगे तो पहले उससे सफाई होती होगी, फिर उसे पोंछा लगता होगा, एंड देन जब बिल्कुल वो उसका पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो फिर आपको पता दिखता नहीं होगा घर में. इसी तरह से ऑल ऑफ अस इन आवर बचपन हैव वेंट टू दिस डब्बा और डेनिश बिस्किट्स जहाँ पर हमें सिलाई मशीन के सामान मिलता था, एंड जैम्स के उसमें चटनियाँ डाली जाती थी. सो वी यूज्ड टू बी लाइक दैट, या. But I think for some reason हमारा वो departure जो हुआ, maybe we need to go back to that, and that's an easier thing to do because it's just we even know the people who used to do it. It's our dadis and nanis and in some cases our parents. So I think that's the easiest thing to do. The second thing is I think we need to consume a little bit less. So I think the overconsumption wala thing that a lot of times we go and we buy more just because we think we'll need. So I had a very dear client. उन्होंने एक बात बोली थी कि just because I can afford it should not mean I should buy it. So I think that kind of value system, I think we need to just start doing and adopting more, which was there in our हमारी सोसाइटी में ये था कुछ. It's not something new. कल्चरली भी हमारा ये था. ये मुझे याद है कि हम अपने मतलब बजाय शादी हॉल्स के, मुझे याद है कि हम दो घर मिला के आपस में मोहल्ले में शादी वहीं हो जाती थी, और खाना भी शेयर हो रहा होता था, वहीं मोहल्ले में बढ़ जाता था एंड में जाके और भी लोगों के लिए. अभी तो है कि जी वो एक एक्सक्लूसिव जगह पे हो रही है, वो सारा ज़ाया हो रहा है. तो वो है कि वो हमारी कल्चर में एक था कि साथ मिल के करना, पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना. बट अब शायद हमारी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा जो है वो फास्ट हो गई हैं, तो आई थिंक वी डोंट थिंक अबाउट इट, बट डेफिनेटली वी नीड टू ये सब करने की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वी स्पोक अबाउट इन व्हेन स्पीकिंग अर्लियर, that it's very important that more people do less rather than less people do more, because when you actually want to make an impact, imperfect starts actually lead to something that can lead to a bigger change. Rather than 3 or 5 or 10 people like us sit and decide to go with zero waste, I would be more happy to know that there are more people adopting 10% less waste doing or something like that. Dabeer, thank you very much for your time. और लास्ट में ये कहूँगा, इन द कॉन्वर्जेशन व्हाट आई लर्नड इज़ कि भाई डोंट वेट फॉर अदर पीपल टू डू थिंग्स. आप थोड़ा थोड़ा करने की खुद शुरू करें, इवन इफ इट्स समथिंग दैट यू थिंक इज़ नॉट पॉसिबल या बहुत टाइम लगेगा उसमें, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. अपने घर से शुरू करें, मोहल्ले से शुरू करें, एंड देन इफ़ यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ ये अपने आइडियाज़ शेयर करें. आई एम श्योर देयर आर अदर पीपल जो भी ये सोच रहे होते हैं, बट बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्शन या हम उसके बारे में इतना बात नहीं करते कि यार कौन करेगा. सो आप ही ने ये करना है, हमने ही ये करना है. तो लेट्स होप कि वी कैन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली डू थोड़ा सा बेहतर फॉर आवर एनवायरनमेंट, और हम कंप्लेन करना छोड़ दें एंड स्टार्ट डूइंग स्टफ.
तो थैंक यू वंस अगेन, बहुत मज़ा आया इनसे बात करने में एंड दीज आर आइडियाज़ जो कि फ्रेश आइडियाज़ हैं जो आई थिंक लोगों को सोचने चाहिए इसके बारे में. एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट एंड वी होप टू सी यू सून इंशाल्लाह. Thank you. Take care, ladies and gentlemen. Thank you for watching.